The numbers are staggering and the data is distressing as Kashmir's walnut harvest is becoming a new agony for the Kashmiris due to the falling deaths that have been happening over the years. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत ही दुखद खबर, एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है तहसील करालगुंड के हाजिन गांव से, और जहां पे बताया जा रहा है कि एक बिलाल अहमद खान नामी एक 35 साला शख्स जो है आज सुबह एक अखरोट के पेड़ पे अखरोट उतारने के लिए चढ़ा था, और वो चढ़ते चढ़ते जब अखरोट के पेड़ की चोटी तक पहुंच गया था और वो अखरोट उतारने में बिजी था कि अचानक उसका पाँव जो है फिसलने की वजह से वो अखरोट के पेड़ की चोटी से नीचे आ गिरा और उसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। Beyond these numbers, the issue is real and so is the concern. These deaths have dented the delight that the season would bring. While these incidents are unrelenting, many are wondering that what is stopping the authorities or the stakeholders to come up with preventive measures. हम जब घर से निकलते हैं दो पैसा कमाने के लिए, फिर आते हैं यहाँ ये ढूंढ फंडाई पर, तो चढ़ते हैं ढूंढ पर, इस चीज़ का भरोसा नहीं है वापस आएंगे या नहीं। अच्छा मोहनी कश्मीर छान वोल आसान डून छान वोल तमिस दिवान लाज ना लूर जीट सह छाना तमे सह जलन मन तम डून जल हेत पे कड़ान तमिस रिस्क आसान तमिस कि बोन तक अल्लाह ताला निजात पे अल्लाह ताला ने बोन गए क्या गए मदद करना ऐसी पाने कुछ ये खाली उसको थप शप करते हैं, एक हाथ से वो दोनों हाथ छोड़ के ऐसे दोनों हाथ छोड़ के लांच मारते हैं, दोनों हाथ छोड़ के। बहुत खान गिर गया, 2-4 पिछले साल मार गया, बहुत मर गया पेड़ के लालच कुछ सात अलग गसान यह हकिस पे लत अत फोक फुटित यह बोन खोखर कह लांकुन दिल गम पता क्या तथ पे लाल सह फुटित यह बोन। हाँ, उधर शोपियान में एक मेरा पड़ोसी था, उसका बाजू टूट गया, एक वो मर गया सिर्फ। बहुत मुश्किल होता है, देखो ये ऐसे हो जाता है, इसका रात को जलन होता है बहुत। Traditional walnuts में you know it कि there is very, we can say, there are very apprehensions of the falling of the harvester. There are various injuries and deaths have been reported. So by the time as we have replaced traditional high density apple orchards with high density apple orchards in the coming future, or not in the, we can say we have rolled out government of Jammu and Kashmir rolled out the policy, rolled out this scheme where we are going to replace traditional walnuts with high density walnuts. Traditionally almost it goes up to the height of 40 feet. 30 to 40 feet, but in high density orchards it will never go beyond 20 feet, never. In traditional walnuts, the farmer or the harvester or the laborer had to climb the tree, then use both of his hands to harvest the fruit. But in high density walnuts, at the maximum he can use a ladder. Just we are using a ladder for pruning of apple trees, he can use a ladder, climb on the ladder and harvest the walnut. Either some of the walnut trees he can use simply a long, we can say log, with that he can harvest the fruit. There is no need to climb the tree. Prevention is better than cure, but in Kashmir such tourism hardly exists. Since people are not adhering to safety measures, the casualties are escalating. तेल बड़ गो पद वाक़ा यूज गो खाद किन वाक़ा गो पुल पर पे तो मूद बान के गई में एक्सीडेंट वारिया सु त्रिम कुल चटिक यम चटिक वारिया जान कुली बान गो यो है खुदा सिंद नावस पे खसान सो अल्लाह ताला सिंद नावस पे मगर इंसान से नटे आसान जिम्मेवारी छ काम छ आसान मे त्राय पानी कार मगर क्या कर चला इंसान लागान ना हेयर ना क्या लगा हेलमेट ना कह चीज इन सेफ्टी क्या हेलमेट बचाव इन गोस हेलमेट तो राज यम चीज गन पेड इन संगन पेड
यह मन करान स्लिप खोर करान स्लिप या लांग फटान दब त्रावान खान से त्रावान दब लांग फटित यह पेवान खान बोन। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं अगर हम पेड़ होंगी ना उसमें देंगे, अगर नीचे नेट होंगी उसमें हम अगर गिरेंगे फिर भी बच सकेंगे। As for now, no such any measure has been, you can say, propounded or propagated, because mostly these walnut orchards are in the higher reaches and they are sporadic. No such systematic orchards have been, you can say, planted. So there isn't such strategy or the policy with this department that we can use those nets extra for when anyone falls from the train to prevent that he isn't injured. Using of the nets, there is no such policy with the government, with the Department of Horticulture. मशीन को रन करना उसके लिए एक आपको बेल ऑर्चर्ड चाहिए, स्पेसिंग चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द ट्रीज so that machine can be drawn in between the trees and shakers are there. We can use them only after we are having organized orchard and we are going to plant high density orchards of walnut. We can use the machines and we can cut down the whatever the injury it was or whatever the we can say deaths were, they all will be eliminated, they all will be cut down. At a time when people are literally beating around the bushes and putting their lives at great risk, a festive harvest season of Kashmir is traumatizing the valley due to these falling tragedies. This is Sheikh Arsh for Kashmir Observer.